Okay. So first we have to agree with and explain how this statement is true, and then we can counter argue it. So अगर हमारे पास ऐसे है for a 20 marks, we know that the first 14 marks is for knowledge and understanding, um, and then evaluation. ना? So 14 marks के अंदर you have level 1, level 2, level 3 answer. Level 1 is 1 to 5, 6 to 10, and 11 to 14. In order to get entire level 3 14 marks, we have to show the examiner that we understand what expenditure reducing policy entails, also, and how it links to the reduction of balance of payment deficit and what this balance of payment deficit is, and all of that. And how will it also have an effect on unemployment, probably like certain types of unemployment we may need to talk about. So you get 14 marks for explanation of this whole concept. Okay. And then for your evaluation, which is the other 6 marks, um, we will have to do a counter argument. वो भी level 1 or level 2 की होगी, 1 to 3 marks and 4 to 6 marks, something like that. Okay. So when we were doing the theory in the previous lecture, वहां पर हमने explain किया था कि expenditure reducing policy होती क्या है. And remember, we have to keep in mind uh, a little definitions from Bamford and all. ठीक, तो Bamford को थोड़ी सी importance देंगे हम अपने इसके अंदर. But the key idea of expenditure reducing policy is that it can include any policy in which our focus is that we would want the local people in the country to reduce their expenditure on goods and services in the country. Okay? Mainly, the reason why you want to do that is that if you take away people's purchasing power and they're unable to buy domestic goods, chances are they won't be able to afford imported goods also. Okay? तो पहला part ये हो गया. The second part is that when you impose these policies, domestic producers, now that they see that domestic consumers don't have the buying power, so then they'll try and sell these goods abroad. Okay? And so उससे exports बढ़ने के chances हो जाते हैं. ठीक हो गया? तो ये हमारी expenditure reducing policy का concept है. ये basically fiscal और monetary policy को, that's their intention. और क्योंकि आप expend like the word says expenditure reducing, and if you remember expenditure, we've all have linked expenditure in the past to aggregate expenditure, which is the same thing as aggregate demand. So kind of like we want aggregate demand to fall in the economy. ठीक है, उसकी वजह से लोगों की स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स विल फॉल, और जब इंपोर्ट्स गिरेगा तो लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उसके अंदर भी करेक्शन आ सकती है. ओके, सो टू एक्सप्लेन, आई थिंक दिस इज व्हाट यू शुड डू. फर्स्ट फर्स्ट एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज को आप डिफाइन करेंगे. डिफाइन एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, ये एक्सचेंज रेट से नहीं मैच हो जाए. एक्स एक्स यू वुड लाइक, वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन, define expenditure reducing policies. There are plenty of them, by the way.
The concept is that you want to reduce aggregate demand in the economy. Okay. So when you're doing that, when AD falls, people's demand for both domestic and imported goods falls. ठीक है? Also, producers starts to export domestic goods abroad. ओके? एक तो ये बात हो गई. फिर उसके बाद I think we should explain balance of payment deficit, not too lengthy, but just briefly, that a balance of payment deficit is when the inflow into the country of the money is less than the outflow. Sorry, balance of payment deficit की है ये meaning. Inflow is less than the outflow. जो layman terms के अंदर we can say the export is less than imports. अब हम ये connection बना देंगे जो अभी ऊपर हमने किया, the whole thing. Therefore, the expenditure reducing policy increases exports, reduces imports. So therefore, the balance of payment deficit reduces. I think that's a reasonable connection to make. It's up to you how you want to do it, but this is sort of like a pattern that we can use to kind of like explain this idea. But obviously, अभी तक मैंने कोई मेन पॉलिसी बताई नहीं है अभी तक इसके अंदर. आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड. So examiner must be getting very curious to know, okay, do I even know the meaning of what policies are in it or not, because I'm just going around the policy so far. So, so we'll clear the doubt. सबसे पहले जब हम एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर we may suggest the contractionary fiscal policy, okay, which is basically what do you do contractionary fiscal policy mein? You reduce government spending and you increase taxes, right? Acha, another policy is contractionary monetary policy. अब थोड़ा सा आपको एएस का कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, where we're talking about, reducing the money supply and increasing the interest rate. So these are the policies which are involved. ठीक है? So you may make the connection and start explaining it. I think we should do it very like extensively. We should explain it because that's what the 14 marks are for. So for example, if I take my first policy here, मैंने इसका connection दिखाना है. ठीक है? The whole idea here is that when we reduce government spending and we increase the tax rate,
we reduce the disposable income of the people. Why D it represents disposable income here. Please make sure that you do the whole thing. So when the disposable income falls, people have less purchasing power. Okay, their purchasing power falls. एज अ रिजल्ट, अच्छा ये जो टैक्स हम राइस की बात कर रहे हैं इसमें इनकम टैक्स भी आता है और उसमें कॉरपोरेट टैक्स भी आता है। तो अगर आप इनकम टैक्स की बात करते हैं एंड कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो वी कैन से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंजम्पशन विल फॉल, investments will fall, you know, and when this happens, naturally aggregate demand in the economy also falls. Okay, ये तो उसका कनेक्शन हो गया। जहां तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात है, वी नो दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑल्सो इंक्लूड्स स्पेंडिंग ऑन imported goods। ऐसा ही है। So if government spending is falling, that means imported goods के ऊपर भी there is a likelihood that that might fall। लेकिन जब ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरेगी तो ये तो डायरेक्टली CIGX-M, तो AD फॉल्स डाउन। राइट, सो ये मैंने फिस्कल पॉलिसी का ये pretty much ही स्टैंडर्ड एएस की नॉलेज है। इसके अंदर तो मैंने अभी तक कुछ भी A2 का ऐसा कुछ डाला ही नहीं है। बट रिमेंबर AS A2 सेम थिंग, you're supposed to know the AS knowledge also when you're explaining the A2s and all। ठीक है। um, फिर उसके बाद इवन द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो आई वुड recommend you to explain this also because it's pretty relevant for this question because extension it's a part of it। So we say कि जब मनी सप्लाई कम है तो दैट मीन्स देयर इज लेस मनी available to borrow and spend। और दूसरी तरफ if interest rate is rising then the cost of borrowing, yeah, if interest rate is going up then cost of borrowing goes up which causes the borrowing to fall। ये प्लीज पूरा थॉट समझाया करो। And that will cause consumption to fall and investments to fall and eventually AD to fall, right? Basically, through this concept right here, um, we want to take the connection that how, as a result of these policies, remember अभी तक मैंने वो अनएम्प्लॉयमेंट से कनेक्शन बनाई नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ लाइक दे ही दी है ओवर हियर कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को टारगेट करके how it will, but if you want to like mention it over here also, you can do that। हाँ जहाँ पे एटलीस्ट मैंने यहाँ इम्पोर्ट फॉल की बात की है and all, but where I'm taking this is towards how AD का गिरना। Okay, how, because the question, if you know, look at the question again, question के अंदर they're talking about unemployment ना, but this will also cause significant unemployment, so I want to answer that now। पीओपी वाला कनेक्शन तो मैं समझा चुका हूँ। सो इफ एडी फॉल्स, राइट, वी नो दैट आवर नेशनल इनकम फॉल्स, राइट, एंड unemployment rises। if you want you can do a diagram over here, कि किस तरीके से ये हो रहा है। the whole explanation basically goes something like this, that if aggregate demand falls, um,
firms lower demand by cutting production, which lowers the demand for labor. um, ये कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है? इफ यू डन द अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर, दिस इज कॉल्ड cyclical या demand deficient unemployment. Okay. So basically, if interest rate goes up, investments will be reduced, leading to fewer jobs opportunities and possible layouts हो सकते हैं. Um, right? So उसी तरह से taxation से भी यही होता है. But this is particularly called demand deficient unemployment. तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन का 14 मार्क का सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है. सो जहां तक बात है कि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी जो है वो बीओपी को रिड्यूस करती है, लेकिन उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो जाती है. um, ये सारा शॉर्ट रन के अंदर होता है बिकॉज एडी इज अ शॉर्ट रन पॉलिसी. बट देन यू आर रिक्वायर्ड टू डू a counter argument, right? Evaluation, that will it always do it or not, right? So फिर जब हम evaluation के अंदर जाएंगे इसके, तो I have to make a counter argument. So कि मतलब to what extent अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. सो एक आइडिया था, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से इफ द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग a positive output gap. Positive output gap was that when the economy had gone above potential. डायग्राम के थ्रू याद कराता हूँ. कॉन्सेप्ट था जब हम कहते थे aggregate demand, aggregate supply, this is where the economy currently stands. But the potential is here. पॉजिटिव आउटपुट गैप कह लें इसको कि किस तरह से वी आर अबव पोटेंशियल, या आप इसको इन्फ्लेशनरी गैप कह लें. बट द पॉइंट इज दैट हम एलआरएस से ऊपर थोड़ा सा अनसस्टेनेबल लेवल्स हैं शॉर्ट रन के अंदर, because it overheats the economy, it creates inflation in the economy and all. But right now the economy's demand is more than uh, the normal way, the potential. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, so if you're saying if the economy is experiencing positive output gap, reducing aggregate demand, तो आप यहां पे हो, reducing aggregate demand may have little impact on unemployment. Little impact आएगा unemployment पे because remember we're already potential पे हमें होना चाहिए था. हम potential से ऊपर निकल गए थे, तो we'll go back to the potential and we always want to reach potential. That's our aim. So reducing aggregate demand will have a little impact on the economy, as firms may simply reduce excess capacity rather than lay off workers. In this case, expenditure reducing policy could improve the balance of payment without causing significant unemployment. तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया इधर कि अगर आप पोटेंशियल से आगे निकल गए हैं, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी आपको पोटेंशियल पे लेके जा रही है. इट्स नॉट अ बैड थिंग, यूर एट पोटेंशियल, इन्फ्लेशन भी चली गई ऑन अ पॉजिटिव नोट, बीओपी भी आपका ठीक हो गया. ठीक है, एक्सपोर्ट्स कम हो गए और इम्पोर्ट्स, सॉरी, एक्सपोर्ट बढ़ गए और इम्पोर्ट्स कम हो गए. तो वी आर सॉर्ट ऑफ लाइक creating
a solution for us over here. तो एक डिस्कशन ये हो सकता है, एटलीस्ट हम पोटेंशियल पे तो इसको हम, अगर आपको, इफ यू नॉट okay with this particular diagram and you feel we are more used to of the other LRAS wala, so you can look at this one. ये हम क्योंकि AS में हम इस पे ज्यादा फोकस करें. So imagine if this is the situation, this is where the economy currently stands at, okay, very high on the price level. एंड देयर सेइंग कि भाई हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करना चाहते हैं ताकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सकें. ठीक है. You use expansionary, contractionary fiscal and monetary policy, diverted people's consumption, therefore reducing people's consumption, AD falls down. ठीक है. Aggregate people's spending on domestic goods have fallen down. बट अगर आप नोटिस करें, क्योंकि हम पोटेंशियल के ऊपर ही हैं, तो अभी भी प्राइस लेवल्स हैव गॉन डाउन, बट वी आर स्टिल एट द पोटेंशियल लेवल. अनएम्प्लॉयमेंट हैजंट रियली गॉटन हर्ट इन एनी वे. और फिर साथ ही में गुड थिंग्स आल्सो कम अबाउट, दैट नाउ द प्रोड्यूसर्स स्टार्ट सेलिंग अब्रॉड, और imports भी कम हो जाएंगी as a result of that, because people's purchasing power has been reduced. So balance of payment problem solved, while the economy still stays at the same level. तो ये हमारा काउंटर हो गया. So you can do that. Additionally, the impact depends on the type of unemployment. जैसा अभी हमने क्या बात की थी कि demand deficit. If unemployment is mainly structural, so let me remind you, what was structural? हमने कहा था structural होता है when there is like a demand supply situation, certain industrial changes from primary to secondary. There's a mismatch between the skills available in the economy and the skills which are being demanded. इसके अंदर by the way technological unemployment भी आती है, इसमें regional unemployment भी आती है, that are the workers able to move from point A to point B looking for work. तो agar if we have structural unemployment in the economy, okay, there's a mismatch of the skills and all. So AD will not significantly worsen the problem, because ये जो एडी गिरने की वजह से हम कह रहे हैं ना कि एडी गिरने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, because when AD falls, output is reduced. The thing is कि वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है, एंड डिमांड डेफिशिएंट के अंदर कोई इतना मेजर फर्क आएगा नहीं. सो reducing AD will not significantly worsen the problem. Those people will still be employed. Contractionary will not create any additional unemployment. जो existing unemployment है वो अपनी जगह रहेगी. वी नो कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्वर है वो है सप्लाई साइड पॉलिसीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू फिक्स दैट प्रॉब्लम. ठीक है. सो बिकॉज हमारा क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर आप एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, तो we're saying, we're making a counter argument here कि नहीं, if your economy has a structural problem, तो रिड्यूसिंग पॉलिसी से और मजीद कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी. आपकी जो पॉलिसी का सोल्यूशन है वो सप्लाई साइड की तरफ है, एंड दैट विल सॉर्ट योर प्रॉब्लम. मोर ओवर, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी में लीड टू एक्सपेंडिचर स्विचिंग विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. होता क्या है, आपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाया और उनकी परचेजिंग पावर कम की. ठीक है. होपिंग दैट imports will fall. हम यहाँ कह रहे हैं कि लोग पता है क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्विचिंग के ऊपर वी हैवंट टॉक्ड अबाउट. देयर इज एन एसे दैट आई वांट टू डू ओवर दैट.
बट मेनली द आइडिया इज कि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो फॉल कर जाती है और वो सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे इंपोर्टेड गुड्स की तरफ। ओके। क्योंकि जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी दे माइट फाइंड कि हमारी जो लोकल इकोनॉमी है their product is not as good as the imported one, so they might decide to switch towards the imported goods uh, in the world, so, which are much more cheaper and efficient and all. So people might actually switch towards those. Why? Because they can't afford domestic goods. So maybe they have alternative goods over there. ठीक. Um, so let me just go back to the question to see if I have answered. Expenditure reducing policy will reduce the deficit, but it will also cause significant unemployment. So we're arguing that if you do follow this policy, unemployment may not occur. Let me see what marking scheme has to say in the evaluation. So it's saying the impact of expenditure will depend upon the state of the economy when these policies are introduced. For example, raising interest rates when economy is experiencing high level of inflation and a positive output gap will have a limited effect on unemployment. Fiscal policy are used, uh, no, if contractionary fiscal policies are used, the impact on unemployment will depend upon the main cause of unemployment that exists, whether it is structural, whether it is frictional, or if it's cyclical. So cyclical ke andar it might help, but not for those. They're also suggesting that contractionary demand side policies might also be accompanied by positive सप्लाई साइड पॉलिसी। तो एक तरफ जहां आपका एडी गिर रहा है दूसरी तरफ एएस बढ़ रहा है, so that may not reduce unemployment. Expenditure reducing policy may lead to substitution of domestically produced goods. इसको इस तरह से सोच लो, जो पाकिस्तान के केस में भी हमको एक sort of नजर आ रहा है ये होते हुए। पाकिस्तानी is heavily taxed, डॉलर became expensive, तो ये एक मॉनेटरी हो गया और टैक्स फिस्कल हो गया। What it did was that it made fragrance perfumes really expensive, the imported ones. Okay? So even people did not have the purchasing power to buy imported perfumes. So as a result, domestic perfume industry responded, expanded, where new players came in, and then an entire industry of fragrance emerged. And so now people have permanently moved away from imported perfumes on a national scale. This has happened, and they are buying these domestic ones of all these clothing companies. If you might have noticed, all these clothing companies, and then individual fragrance companies have also come up who started off by first selling um, the, the copies of the originals in terms of smell, fragrance, scent, and then they've started creating their own fragrances also now. So it just a new industry has emerged out of this. तो ये भी एक situation है कि unemployment hasn't happened because substitute industries have come about. तो ये इस तरह से this particular question could have been um, answered. ठीक। सो ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, जिसके अंदर हमने फिस्कल और मॉनेटरी दोनों को सॉर्ट ऑफ डिस्कस कर लिया। ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन, लेट मी जस्ट डील विद सिमिलर टाइप्स ऑफ यू। एक और इस तरह का जो क्वेश्चन आया दैट वाज जून 23 के अंदर है।
Let me open that one. June 23, variant um, 41, question number 4. So let me show you this one. All right. So let's just first, before looking at the marking scheme, let's just think about it. Okay. An increase in a government's budget surplus will increase unemployment in the short run, but it will make it easy to control a BOP deficit in the long run. A few things you must explain. Number one, the same balance of payment deficit क्या होता है? ठीक है? Like we spoke about it just a bit ago also. लेकिन यहाँ पे जो हमें मेन एक्सप्लेन करना है, एक तो नंबर वन, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की क्या बात हो रही है. So first thing we want to do is we want to explain balance of payment surplus. Government का बजट होता है, बजट में you have government spending versus in government's revenue. You can explain this. Government revenue comes mainly from taxation, and government spends on merit, demerit, merit goods administration, public goods, वगैरह वगैरह. A balance of, budget surplus is when the government spending is less and taxation is more. From the circular flows point of view, the inflow is less and the outflow is more. So the concept here is you're taxing more and the government spending is less, which will cause AD to fall down. You remember that? तो अब वो जो हमने प्रीवियस ऐसे में डिस्कशन किया था, यू कैन टेक दैट लीड बिकॉज ये फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है. एंड सो यू कैन टॉक अबाउट हाउ एडी के गिरने की वजह से जो है द रियल आउटपुट इन नेशनल इनकम विल फॉल, एंड उसकी वजह से जो डिमांड फॉर लेबर है दैट इज गोइंग टू फॉल, एंड it will increase unemployment. Sure, demand will fall, so उसकी वजह से unemployment is going to rise in the economy. So we're going to explain the whole connection जो अभी पीछे भी किया है हमने. ठीक है. और जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो ही रही है तो प्लीज आदत बनाओ, ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन है बिकॉज एडी इज फॉलिंग डाउन, सो दैट इज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. So in the short run will increase unemployment in the short run, but long run के अंदर ये balance of payment deficit को ठीक करेगा कि नहीं करेगा. um, I think I'm just thinking कि इसकी evaluation मैं अभी डालूंगा कि बाद में डालते हैं. Because short run के अंदर will it reduce it or not? That is something, it's a questionable thing. Contractionary policy, will it lead to? Yes, AD can fall and whether unemployment can rise. तो यहाँ पर हम वही डिस्कशन दोबारा लेकर आ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी कि नहीं होगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज. अगर हम इधर हैं और एडी गिरता है तो मे बी अनएम्प्लॉयमेंट मे नॉट राइज, उल्टा आपके लिए इन्फ्लेशन वगैरह कम हो जाएगी. सो दैट वुड बी अ पॉजिटिव थिंग. वी कैन मेक दिस, लेकिन लेट्स सी कि इसको इवैल्यूएशन में भी वी कैन आल्सो डील विद इट. ठीक है. अब इसको दिखाते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर जो है इसकी वजह से डेफिसिट ठीक होगा कि नहीं होगा. पहले तो मेरा ख्याल है सिंपल एक कनेक्शन वो जो हमने पिछले ऐसे में किया इस कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर, कि अगर एडी गिर ही रहा है तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब कम है तो उससे गवर्नमेंट्स की इंपोर्टेड गुड्स में रिडक्शन आ जाएगा. और दूसरा, क्योंकि परचेजिंग पावर गिर रही है तो लोग इंपोर्टेड गुड्स कम खरीदेंगे
और साथ में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएगा, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है, वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड सो इट विल फॉलो what we were hoping for. So, yeah, in the long run, a budget surplus may help control BOP deficits, particularly in the current account. बार बार मैं ये चीज को separately mention जरूर करता हूँ. A fall in aggregate demand reduces imports as domestic consumers and firms spend less on foreign goods and services. This can improve the trade balance. Furthermore, a sustained budget surplus may reduce government borrowing, lower interest rates. Uh, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, उससे हमारी एक्सपोर्ट competitiveness बढ़ सकती है. इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है, उससे हमारी एक्सपोर्ट, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है ना, इफ एडी फॉल्स प्राइस लेवल गोज डाउन, हमारा प्रोडक्ट बिकम्स मोर competitive, एंड देन हमारा बीओपी के अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है. तो काफी हद तक तो लॉजिकली दिस पर्टिकुलर पॉलिसी मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. लेकिन हम अगेन इवैल्यूएशन पे जाएंगे, वेरी सिमिलर इवैल्यूएशन टू द प्रीवियस वन, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखने को था, उसमें थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन भी आ रहा था. इसमें फोकस इज मेनली ऑन द कॉन्ट्रैक्शनरी. तो evaluation के अंदर we could say something like that, however, the impact on unemployment depends on the initial cause of unemployment. If unemployment is because of the structural unemployment, which deals with the skill mismatch or technological regional changes, then reducing AD through the budget surplus may have little impact, not much. So, in such cases, supply side policy would be more effective than fiscal policy. Um, और ये भी लिख सकते हो also, the negative impact on unemployment is more significant when economy has substantial spare capacity available. We are not over here, okay, we're not over here, but if we are over here, और फिर अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है तो बहुत बड़ा मेजर अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट आएगा. दैट कैन क्रिएट मच वर्स सिचुएशन. ठीक है. उसके अलावा you can use, I guess you can also talk about that whole substitution thing जो मैंने अभी पीछे ही explain की है. So यहाँ पे भी evaluation काफी हद तक बहुत ही similar evaluation है, not much of a difference. That how, because of the reducing demand and not buying imported stuff, people still want fragrances, so domestic industries emerge as a result of that, और उसकी वजह से भी ये करेक्शन हो सकती है. सो आई थिंक ये दो हमारी रिड्यूसिंग पॉलिसी के दो अच्छे क्वेश्चंस हैं which have come um, in 2023. 2025 के अंदर जो है वो स्विचिंग वाली साइड के ऊपर आया है, सो वी गोना डील विद दैट इन द नेक्स्ट सेशन.